Now it is important to know the properties of light. In this connection, let me ask a question as we use to see the shadows of the objects in our surrounding in our everyday life. So tell me, what is shadow and how is it formed? Actually, shadow is the impact of obstructions offered by opaque object lying along the propagation of light. Now think if light could bend easily and go behind the opaque object, then no shadow could be found. So formation of shadow confirms that light always travels in a straight line path. This property of light is known as rectilinear propagation of light. तो समझ गए है कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है. इसी प्रॉपर्टी की वजह से लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज दैट it does not need a material medium to travel. That is, it can travel through a vacuum. The best example of this is that sunlight reaches the earth. Now you can compare this with sound, about which you have studied in 9th class. Third property of light is that it travels at a tremendous speed, that is approximately 3 lakh km per second. According to current scientific theories, no object of the universe can travel at a speed greater than that of light. अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? The light that enables us to see has a very small wavelength. और इसकी वेवलेंथ कितनी होती है इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा. 4 into 10 to the power minus 7 meter to 8 into 10 to the power minus 7 meter. Be sincere, you all have to write down the properties in your class notes. As per your requirement, you may pause the video while making notes. Now, nature of light. This means that to find the answer of the question that does a source of light emit particles of light or does it cause some kind of wave motion? मतलब प्रश्न यह है कि लाइट में पार्टिकल एमिट होते हैं या यह एक वेव की तरह है. नाउ इट हैज बीन प्रूव्ड दैट लाइट हैज ए डुअल नेचर, मीन्स बोथ पार्टिकल एंड वेव. सो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, light consists of electromagnetic waves which do not require a material medium for its propagation. And according to particle theory, light is composed of particles which travel in a straight line at a very high speed. अब ये जान लो कि the elementary particle that defines light is the photon. अब देखो, reflection, refraction and casting of shadows of objects by light can be explained only if light is thought to be made of particles. वेव थ्योरी ऑफ लाइट इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है. अब देखो, कुछ फिनोमिनन जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट अबाउट विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी ओनली. इन्हें हम पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. Thus, according to modern quantum theory, light is considered to be of dual nature. यानी पार्टिकल और वेव थ्योरी ऑफ लाइट दोनों को एक्सेप्ट किया गया है. तो नेचर ऑफ लाइट में ये जो एक्सप्लेन किया गया है उसका भी इस वीडियो लेक्चर के जरिए आप क्लास कॉपी में ये नोट्स बना लेंगे. ठीक है. अब आगे कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, इनके आंसर आपको कॉपी में प्रॉपरली लिखने हैं.